So today we are meeting here for the purpose of understanding Indian society and social issues as a part of our general studies syllabus, right? Now you people might be getting several lectures, particularly in this series, where we are introducing you the different parts of UPSC syllabus, right? It must have started with Tukaram Yadav sir's lecture, and then different subjects like history, geography, ethics, essay were introduced to you, right? Now you have a brief idea about how the UPSC syllabus has been divided. It will give you a very quick recap of all the things that are required for continuation of our discussion for the Indian society and social issues part. So if you look at the UPSC civil service examination, you have three examinations to attend there: preliminary examination, main examination, and then personality test, that is interview. So preliminary examination is of a qualifying nature, means you have to go attend it. If you qualify, they will call you for the mains examination, where the real competition lies. Because that is an examination which has 1750 marks allocated to it, 1750. And they are divided in your 4 general studies paper, GS 1, 2, 3, 4, 250 marks each. So that becomes 1000 marks. Then comes an important part of it, that is optional subject. Optional subjects means you have a list of a subject out of which one subject you have to choose. That is a choice given to every individual, and that's why they are referring it as a optional subject, which will carry 500 marks weightage, and then essay paper will be there, which will be again 250 marks. So combining the total makes it a 70-50 marks examination means. Language की भी paper होंगे. English is a compulsory language, and then another language is a choice language. Some people might choose Marathi or Hindi, or depending on whatever second language they have to choose. So they are again of a qualifying nature. तो उसके पेपर आपको देने पड़ेंगे. If you qualify that paper, आपका आगे का मेंस का एग्जामिनेशन का इवैल्यूएशन होगा. But उसके जो भी मार्क्स है, that will not be counted into total tally of that 1750 marks का कोई वेटेज नहीं है. But yes, you have to qualify that. और फिर ये 1750 में से जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे, that will be carry forward, and then you have to they will summon you for interview purpose. Then interview 275 marks is there, out of which whatever you will score, mains and interview marks will be clubbed together to give the final marks, that is their final mark sheet आएगा, and according to that the result will be declared. So now we got a basic idea about how the UPSC examination is conducted. Preliminary, mains and interview, ये 3 stages में होगा. We are today here to talk about the mains examination primarily. क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो ये इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज पार्ट इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड एनीवेयर इन योर प्रिलिमिनरी सिलेबस. अब जब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, तो यू माइट हैव व्हाट द सिलेबस. You can also get it from UPSC's website, or you can also go on the Unique Academy's website and you can simply download it from there. So where if you go through the detailed notification that UPSC gives you generally in the month of February every year for the examination that is going to be there in May or June examination, उसके हिसाब से वो notification करते हैं कि how much post we are going to select this year. तो उस notification में अगर आप जाओगे, you have given 2 types of syllabus. First syllabus is a preliminary syllabus, and second is a mains syllabus. So preliminary syllabus is actually, we can say, a selected component out of mains आपको prelim में दिए हैं, which includes history, geography, polity, economics, environment, science and technology, current affairs. ये primarily area cover करते हैं, and in paper 2 you have to attend an aptitude का test in which you have English comprehension, mental ability, quantitative aptitude, logical reasoning. ये paper 2 में आपको रहेगा. So this paper 2 will not be continue further. Aptitude एक ही बार आपको check किया जाएगा, just in the preliminary qualifying nature. But ये जो paper 1 है आपका prelim का, general studies जिसको बोला जाएगा, that will be further checked in the mains examination in a much elaborated manner. So
ये जो आपको प्रीलिम का जो सिलेबस है दैट विल अगेन कंटिन्यू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये मेंस में भी रिपीट होगा. एडिशन टू दैट दे हैव एडेड सम मोर कंपोनेंट्स इनटू जनरल स्टडी, जिसमें अगर आप देखोगे दिस कंपोनेंट इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज इज अ पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 1. तो जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था, जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 पेपर उन्होंने बनाए. ईच पेपर दे हैव इंक्लूडेड सम कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, जीएस पेपर 1 में दे हैव इंक्लूडेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इशू. इसको अभी से हम लोग इंडियन सोसाइटी करके शॉर्ट फॉर्म में बुलाएंगे, या सिर्फ सोसाइटी करके भी आप उसको बुला सकते हो, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेम ऑफ द सब्जेक्ट. तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी आपको जीएस पेपर 1 में दिया है. इन पेपर 2 दे हैव गिवन यू पॉलिटी, गवर्नेंस इशू, इंटरनेशनल रिलेशन. इन पेपर 3 दे हैव गिवन यू इकोनॉमिक्स, then environment, disaster management, science and tech, security issues. And in paper 4, now this is a new additional part to you, which is not there in prelim also, very similar to Indian society. The part is ethics and aptitude. तो ये नीतिमत्ता, ethics, नीति शास्त्र जो भी है, now this is a separate component of 250 marks, again not there in prelims but there in the mains examination. And again then 500 marks optional subject is there, which is again a very important part of your preparation. ये सारा जो चीज है इसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो यू फाइंड आउट दैट इंडियन सोसाइटी इन पेपर 1, इंटरनेशनल रिलेशन इन पेपर 2, सिक्योरिटी इश्यूज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन पेपर 3, पूरा पेपर 4, and then optional subject. These are the additional parts for your mains examination, which is not there in the preliminary examination. And that's why whenever you are preparing for the examination, first you need to know the examination. The examination exactly है क्या, हम लोगों को क्या prepare करना है. And when we know this particular thing, we can properly plan our examination. तो आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं. Now you please tell me, how many of you are planning to go and give 2024 का attempt? Anybody here? Almost नहीं है. How many of you are planning for 2025 का? Almost, I think almost everybody is planning for 2025, क्योंकि 2024 के लिए तो अभी बहुत ही कम समय बचा है. Actually अगर आप देखोगे तो 2025 के लिए भी कम समय बचा है. I will give you how. So when you are planning for the examination, आपका प्रीलिम आएगा मई 2025 में टेंटेटिव, राइट? इस साल का कब है एग्जामिनेशन प्रीलिम का? इस साल का मेंस का एग्जामिनेशन कब है? सितंबर में. तो सितंबर चालू हो गया, आज एग्जामिनेशन है क्या? तो पहली सबसे चीज क्या बताना चाहिए कि हमारा एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या होता है. We have to know that. अभी now we have already entered into the journey of UPSC ना, आ गए ना हम लोग, अभी यहाँ पे बैठे मतलब आ गए आप लोग, प्रिपरेशन करने की इच्छा तो रखते हो. So now you are entered into the journey. So we have to know the examination very promptly. First की एग्जामिनेशन कब कब होता है. तो जनरली अगर आप देखोगे तो 2023 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ लास्ट संडे ऑफ मई, राइट? 24 का भी लास्ट संडे ऑफ मई को होगा. तो मोस्ट प्रोबेबली 25 का भी आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा होगा अराउंड द लास्ट संडे ऑफ मई महीने के आसपास आपका होगा. एंड अभी 15th मिड ऑफ सितंबर मेंस एग्जामिनेशन है, वेरी सिमिलर टू दैट. 24 का भी मेंस एग्जामिनेशन उसी टाइम में शेड्यूल्ड है. 24 का तो शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है, तो आप उसको देख सकते हो. 25 का आ जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी कंटिन्यूज इट्स टाइम पीरियड इन अ वेरी रिजिड मैनर, so that student can plan according to the dates of the examination. तो जब हम लोग देखते कि मई महीने के एंड में, तो हम लोग जून ही पकड़ लेते. इन द मंथ ऑफ जून वी हैड अ प्रीलिम, और सितंबर में अगर मेंस है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3.5 months आर अवेलेबल फॉर अस फॉर द मेंस प्रिपरेशन. जो हम लोगों ने अभी तक डिटेल में बात किया, इतना सारा सिलेबस इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू read it and prepare it in the very first way in the 3.5 months. तो 3.5 महीने में पूरा सिलेबस पहली बार करोगे, ऐसे बहुत ही डिफिकल्ट है, कंप्लीट ही नहीं होगा. एंड दैट्स व्हाई इसका मतलब क्या है, आपको पहले से ही क्या करके रखना पड़ेगा,
मेंस का सिलेबस थोड़ा सा कवर करके आपको रखना पड़ेगा। एंड इसीलिए वी हैव टू प्लान कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कब प्रिपेयर करूंगा। फॉर एन एग्जांपल, सपोज आई एम प्लानिंग फॉर 2025, तो उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं कब प्रिपेयर करूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि मैं 2024 में नेक्स्ट ईयर ऑप्शनल सब्जेक्ट करूंगा, which can also be a good option. Or some people might be saying कि मैं इसी साल optional subject complete करूँगा। Now what is the difference between these two candidates? It is all about thinking process कि मैं कब कौन सी चीज prepare करना चाहता हूँ। For an example, suppose आप नेक्स्ट ईयर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करोगे और प्रिपरेशन शुरू करोगे, तो जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो लेट से जुलाई मंथ में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू हुआ, जुलाई 24 टू दिसंबर 24 आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ी, बट जनवरी 25 से तो आप तो प्रीलिम की प्रिपरेशन शुरू करोगे, सही है ना, क्योंकि मई 25 में आपका क्या है, प्रीलिम एग्जामिनेशन, तो 4-5-6 महीने आप पहले प्रीलिम का प्रिपरेशन शुरू करोगे। सो आप फिर मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस कब करोगे, स्पेशली ऑप्शनल सब्जेक्ट का, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो अगर मैं जुलाई 2024 में, दैट इज नेक्स्ट ईयर, इफ आई एम ज्वाइनिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस का मेंस का पार्ट में उस समय पे प्रिपरेशन कर देता हूँ, तो आई विल ओनली गेट अ टाइम टू स्टडी इट, not to revise it, neither to write some good answers or test series. So writing practice plays a very important role in your preparation. तो वो component कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा weak रह सकता है, and that will play a very important role after you clear the prelim. तो आपका वो एरिया जो है उसके ऊपर आपको ज्यादा थोड़ा सा मेहनत उस टाइम पे करना पड़ेगा। लेकिन इस साल अगर आप प्रीलिम कर सकते, इस साल अगर आप मेंस की तैयारी करने के लिए शुरुआत कर दो, फॉर एन एग्जांपल जीएस मेंस है या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका अगर आप अभी से ही शुरुआत कर दोगे, तो इन द वेरी बिगिनिंग अभी नया नया शुरुआत है, तो यू विल फाइंड आउट दैट लॉट ऑफ बर्डन इज हैपनिंग, कि बहुत सारा वर्क आ गया, एकदम करना पड़ रहा है। बट एज एंड व्हेन यू विल प्रोग्रेस 6-8 महीने के बाद, एट दैट टाइम यू विल फाइंड आउट दैट कि थोड़ा सा मेहनत पहले से ही कर लिया, इसलिए अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, एंड देन आई गेट लॉट ऑफ टाइम फॉर डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, रिविजन, जो भी आंसर लिख रहा हूँ चेक करके ले रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द टीचर्स, सो आई कैन इंप्रूव अपॉन इट। तो ये सारा आपको सोच के चलना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द सब्जेक्ट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वो हम लोग तो बात करेंगे ही करेंगे, बट यू नीड टू प्लान इट इन अ वेरी वेल वे, एडवांस तरीके से अगर आप प्लान करोगे, और टाइम अगर आप सही जगह पे सही चीज के लिए यूज करोगे, तो दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल एडवांटेज as compared to other people who are preparing for the examination. Understood? Now, after getting a brief idea कि examination actually है क्या, how we need to plan our time ahead, and what are the different components of the subjects general studies including are there. Now we have come to a point where we are going to focus our discussion on general studies paper 1, और उसमें भी से 3 कंपोनेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, उसके सोसाइटी कंपोनेंट पे हम लोग अभी आ जाते हैं, राइट। नाउ व्हेन वी आर रीडिंग दिस नेम ऑफ द सब्जेक्ट इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, तो बेसिकली ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में क्यों दिया है यूपीएससी ने, ये थोड़ा सा बेसिक उसका अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ना अगर आप देखोगे तो ये नए सिलेबस का पार्ट है। नया सिलेबस मींस इन 2013, अबाउट 10 years ago, यूपीएससी चेंज सिलेबस एंड पैटर्न आल्सो। तो 2013 के पहले ये पार्ट नहीं था सिलेबस में, डायरेक्टली नहीं था, मतलब दे हैव नॉट मेंशन दैट एज अ वेरी एक्सप्लिसिटली मेंशन, सेपरेटली मेंशन टॉपिक इन द सिलेबस। इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा से आ रहे हैं, 20-25 साल से इसके ऊपर क्वेश्चन तो आते रहते थे, but now they have mentioned it as a part of syllabus कि explicitly ही ये part के ऊपर question पूछने चाहिए। Now when in 2013 they brought this, and after that last 10 years they have conducted examinations, and we have seen what type of questions they are asking. So we got to understand that you people who are going to be an officer in the government in the future, you can be a better government officer if along with the law,
along with the administrative rules and regulation, if you know the society that you are going to operate in a better manner. क्योंकि आप सोचो, you are not going to sit in a particular office or a laboratory or let's say in front of a desktop like an IT engineer or a let's say mechanical engineer who is designing a particular product. So आप किसी मशीन के सामने बैठ के या किसी लैबोरेटरी में बैठ के साइंटिस्ट की तरह अपने दिमाग से काम नहीं करने वाले हो. You are going to work in a society which is comprised of different people, and India is known for its own diversity. अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप के सोशल ग्रुप्स हैं. तो अगर इस सोसाइटी को आप सही से नहीं जानते तो आपको इसको इम्प्लीमेंट करना, आपको इसके बारे में काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. कैसे? तो just take an example. I will ask you something. For an example, we generally have a preconceptual notion that what is right or wrong. लेकिन हम हमेशा सोच के जाते हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है. बट मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहूंगा, I will try to prove it, that what is right or wrong or what is good or bad will be depending on that time and that society. ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं आपको सबको पूछता हूँ, you all have to answer this particular question. Now you tell me, is it right, is it good to allow women to get an education? It's right or wrong? किसको किसको लगता है राइट है और किसको लगता है रॉन्ग? किसी को नहीं लग रहा है रॉन्ग. ठीक है, सबको लग रहा है राइट. Now let me rephrase the question. So I am now saying we are, because when I asked you a question, you all consider that you are sitting in Pune in India and let's say 2023, तो आपने इसको आंसर दे दिया. Now let me rephrase the question. Suppose we are all sitting in Afghanistan today and I ask you the same question. Then what you will say? Is girls education allowed there? वहाँ पे allowed? तो मैं अगर आपको पूछता हूँ कि क्या आपकी लड़की को स्कूल भेजना चाहिए, तो what you will say? No, not allowed. अगर मैं भेज दूंगा तो मलाला जैसे उसके भी सिर में गोली मार दी जाएगी. You know ना, मलाला यूसुफ. So what is the question now? Let me change the question. आप बोलोगे सर कहाँ जा रहे हो अफगानिस्तान में, हम तो इंडियन सोसाइटी के गवर्नमेंट ऑफिसर बने. कोई बात नहीं, टाइम पीरियड चेंज कर दे. Now suppose we are sitting here in 17th century and I ask you कि गर्ल्स एजुकेशन अलाउड है क्या, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, अलाउड नहीं. गर्ल्स एजुकेशन इज नॉट अलाउड. Then what is happening here? Same society in a different time period has different conception of right and wrong. Means what is allowed in the society and what is not allowed in the society. Second example मैं आपको देता हूँ. Suppose a girls come to you. She is wearing a hijab. तो क्या आपको आपके ऑफिस में आई तो आप उसको बोलोगे हिजाब निकाल के रखी? नहीं बोलोगे. Why? Because you believe in diversity. And our constitution also gives every person freedom to choose their appearance if it is not indecent in nature. Understood? But suppose we are all sitting in French society. फ्रांस के ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में या स्कूल में आप बैठे हो, तो कोई भी वहां पे स्टूडेंट cannot wear a uniform which is not prescribed by the educational authorities. तो आप वहां पे हिजाब पहन के नहीं जा सकते या टर्बान पहन के नहीं जा सकते. लाइक सी, बिकॉज फ्रेंच सोसाइटी सेज यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एवरी पर्सन हैज टू बी सेम. बट इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाउ अंडर डिस्कशन. यू माइट बी रीडिंग इट थ्रू द न्यूज़पेपर कि ट्रिपल तलाक के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, या सबरीमाला टेम्पल इश्यू के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा. तो दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड. और ये सारी बातें हमारे डिस्कशन में आएगी. But point is that why in India we say that any person can wear turban or carry kirpan or maybe wear a hijab, but if you go to another society it is not allowed. Then why is this is happening? ये हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा. Then and then only when you understand what your society is, then and then only you can operate in that society even as a simple ordinary, let's say, member of the society or a caretaker of the society in the form of a government officer. So to know the society better, this part was added to your syllabus. अरे समझ रहे हो, right?
तो शायद आप में से कुछ लोगों ने must have seen the movie called as Article 15. देखिए वो मूवी. So that is the difference. This person has come from an elite background and then IPS officer बन जाते हैं. And he basic do not know the basic difference between the social aspect की caste system क्या होता है. And then he faces a lot of trouble when he goes into the real field and operates. But सीख जाते हैं because of intellectual person. और फिर कैसे चेंज होता है वो आप सब लोगों ने देखा. Now today we will understand ये सिलेबस उन्होंने क्यों ऐड किया है ये तो मैंने आपको बता दिया. So that you can become a person who can participate in the society while being a government officer, and then you can implement the government policies and schemes in a better manner. तो जब उन्होंने ये सिलेबस आपके सामने रखा है तो एग्जैक्टली आपको क्या क्या पता होना चाहिए इंडियन सोसाइटी के बारे में ये आपके सामने उन्होंने रखा है. तो प्लीज लुक एट द सिलेबस whatever is mentioned there. एक बार पढ़ लेना. Now first topic, अगर हम लोग यहाँ पे देखें salient features of Indian society. तो दिस इज एन काइंड ऑफ एन ओपन एंडेड टॉपिक. तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको डाली जा सकती है. फॉर एन एग्जांपल जैसे हम लोग बोल रहे थे कि let's say caste system is a feature of Indian society, which is very unique, not that seems to be appearing in other part of the world. Or let's say patriarchal nature of Indian society is again a kind of a feature, isn't it? Can we say Indian society is patriarchal in nature? What is patriarchy? Male's dominance is there in the society as compared to female. In every aspect of social life, male has their own dominance. So that is patriarchal nature of society. Can we say family system is university diversity? ये इंडियन सोसाइटी के फीचर्स है. तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होंगे. विल डिस्कस देम इन सेपरेट लेक्चर. लेकिन we have to see that the salient features of Indian society. Now this is very important because see they have not given a list of what salient features they are going to ask you. That makes it an open-ended topic. So such type of topics becomes actually challenging for aspirants as well as teachers also to teach and learn, because we have to predict now ki what feature of Indian society UPSC might think that as an important feature and can be asked in the examination. तो इसके लिए हम लोगों को करंट अफेयर्स का थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन द कंटेम्पररी सिनेरियो उसकी तरफ हम लोगों की एक हमेशा आंख होनी चाहिए कि ये अगर सोसाइटी में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है, तो इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है. Then comes role of women and women organization. Now women being a very important integral part of society, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा. Then comes population and associated issues, poverty, urbanization. Now अगर इन टॉपिक को हम लोग देखेंगे तो some of the student might who have studied a little bit, उनको लगेगा ये तो ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने कहीं पे तो पढ़ा है. Population is associated with geography, urbanization is also associated with geography. बट उसको जब आप आगे देखते हो associated issues, problems and remedy, that makes a societal issue. तो इसमें आपको हमेशा क्या देखना पड़ेगा? Looking at the name of the syllabus again, they have given Indian society and social issues. Now इसके ऊपर आपको हमेशा क्वेश्चन आते हैं. So Indian society is there, it is there for thousands and thousands of years. But the social issues will be different in different time period, isn't it? So whatever are the social issues of maybe 21st century would not have been the issues of 20th century. In 19th century, there would have been different social issues. So the government officers or the, let's say we can say the caretakers of the society of that time period need to deal with these social issues, and then we have to move toward in the positive direction so that modernization will appear in the society. फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि सोशल इश्यूज क्या है. तो इस 21st सेंचुरीज के ये सारे इश्यूज है. देखो आप पॉपुलेशन तो इश्यू है ही इंडिया में, है या नहीं? क्यों है इश्यू? सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन. कितनी है? अरे बहुत है, मतलब बहुत सबसे ज्यादा पॉपुलेशन. वी हैव ऑलरेडी बिकेम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, रीचिंग टू 140 करोड़. और आपके
दया से 150 करोड़ हम लोग पहुंच ही जाएंगे आपके कंट्रीब्यूशन के बाद सबके। हम लोगों ने पहले नंबर तक लेके आए कंट्रीब्यूशन करके, आप लोग उसको पहला नंबर टिकाओ, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So in one way, from one point of view, population plays a positive role also, because now we have a lot of hands to work, lot of brains to contribute. So knowledge economy की तरफ हम लोग उसको देख सकते हैं, more people, more human resource. But from the other side, it may create a lot of challenges also. Resources लगेंगे उनके लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लगेगी, एजुकेशन देना पड़ेगा, हेल्थ देनी पड़ेगी, उनका खाने का इंतजाम, फूड सिक्योरिटी करना पड़ेगा। नाउ दिस इज आल्सो अ चैलेंजिंग एस्पेक्ट। तो हम लोगों को बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेगा या डेमोग्राफिक बर्डन बनेगा, ये इसमें हम लोगों को डिस्कस हो। तो यस, ज्योग्राफी का एक बाजू पे हम लोगों को नॉलेज जरूरी पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू आल्सो सी कि इसका इम्प्लीकेशन सोसाइटी के ऊपर है। लुकिंग एट द अनदर टॉपिक, लेट्स से पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, तो ये इकोनॉमिक्स के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होता है। सो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का नॉलेज देखते देखते वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड सोशल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इट। So poverty is not only related to economic poverty, it is only the one dimension of poverty. But उसको देख के when there is an absence of opportunity, void of capacity building, that creates a lot of social challenges, and that social challenges we have to understand through the poverty and developmental issue. क्योंकि अगर आप सोचो पॉवर्टी अगर सिर्फ इकोनॉमिकल इश्यू होता, तो जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 50 साल पहले 1970s 80s में, तब से तो अब तक पॉवर्टी चला जाना चाहिए था, isn't it? Yeah, if we try to see poverty is only an economical issue, there would not have been the single case of poverty to developed world. अगर हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, which is one of the most, let's say, powerful economies in the world, we see the incidences of poverty in that society also. तो सिर्फ पैसे का बात, if it would have been the case of economic dimension, तो वहां पे पॉवर्टी नहीं होना चाहिए था। But why poverty lies there also, and why poverty lies in India also? So there is some social dimension to it that we have to understand in this part of the discussion. Then globalization का Indian society पे क्या असर हुआ है? Issues like communalism, regionalism, secularism, ये सारी चीजें क्या बात करती है? Social empowerment, again we can connect here also along with another topics. तो ये सारा हम लोगों को इंडियन सोसाइटी के सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ दिस गिव्स यू अ स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट में क्या पूछा जा सकता है, उसका एक आपको लोकस एरिया दिया जाता है। सिलेबस गिव्स यू अ लोकस एरिया कि किसमें आपको किस एरिया के ऊपर आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। बट आफ्टर दैट आल्सो, सिलेबस के बाद आल्सो वी हैव टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बट उसके पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, तो when we were discussing syllabus, we have already discussed this point कि interdisciplinary nature subject का कैसे है। For an example, जब हम लोग GS 1 में बात कर रहे थे कि geography is also part of GS 1, ये बात किया था ना, और उसमें हम लोगों ने यहाँ पे दो टॉपिक देखे, एक पॉपुलेशन का टॉपिक देखा, isn't it? और दूसरा कौन सा टॉपिक देखा था? अर्बनाइजेशन वाला। तो कैन वी से दैट इट इज कनेक्टेड टू ज्योग्राफी। देन GS 2 में पॉलिटी इज अ पार्ट ऑफ इट, राइट? इसमें अगर आप देखोगे तो सेक्युलरिज्म का टॉपिक था, है क्या? नो, व्हेन यू रीड योर पॉलिटी, सेक्युलरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू विल रीड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर पॉलिटी प्रिपरेशन। बिकॉज जब आप शुरू करते हो तो पहला चैप्टर आप पढ़ते हो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो शुरू में दिया गया है, कुछ वर्ड लाइंस में दिया है, उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड उन्होंने लिखा ही है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। तो उसका मतलब आपको समझाया जाएगा क्लास में, तो तब आपको समझेगा कि अच्छा सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि सर्वधर्म समभाव। शायद आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो इसको हम लोग सोशल साइंस के हिसाब से भी, सोशल इश्यूज के हिसाब से भी पढ़ेंगे। तो देखो इसके साथ है GS 3 में हम लोगों ने ऑलरेडी इसको इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट किया था व्हेन वी टॉक अबाउट द कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, राइट? और GS 4 के साथ भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है इथिक्स एंड एप्टीट्यूड के साथ। फॉर एन एग्जांपल, जो एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी दिए थे उसको ही बाद में वापस लेके आते हैं। See, ethics is a subject where you will always
find a discussion revolves around what is the right thing to do. कि सही चीज कौन सी है और गलत कौन सी है. This is a basic question ethics will try to solve. लेकिन हम लोगों ने अभी देखा कि कौन सी चीज सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है. This is very closely connected to the society that an individual is referring to, isn't it? कि गर्ल्स को एजुकेशन दिया जाएगा कि नहीं चाहिए, कास्ट सिस्टम में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए या नहीं चाहिए. तो इफ यू आस्क इट टुडे एवरीबॉडी विल से नो, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम. बट इफ यू गो एंड सी द 15th century, every person was practicing untouchability and no one was finding it wrong, and that's why it is being practiced in the society. So the जिसको हम लोग तक सही और गलत के मायने ये सोसाइटी से चेंज होते हैं, टाइम पीरियड से भी चेंज होते हैं. सो टू डेवलप let's say in-depth understanding of the dilemmas that a person is going to face during the ethical discussions, उसको समझने के लिए आपको सोसाइटी का नॉलेज अगर आपके साथ में होगा तो आपको ये डिस्कशंस करने में मजा भी आएगा और उसके कंक्लूजन तक पहुंचने में आपको आसानी भी होगी. अंडरस्टूड? Along with that, other part of the syllabus it is connected to is, if you see, this part is basically जो आपको बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का चॉइस यूपीएससी ने दिया है, उसमें you will find out there is an optional subject called as sociology also. Right? Anybody here from the graduation background sociology है किसी का? ठीक है. तो सोशियोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट ही है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसका बहुत ही मिनिएचर वर्जन आपको जीएस में इंडियन सोसाइटी में दिया है. वैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में भी देखोगे. फॉर एग्जांपल जो हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका मिनिएचर वर्जन जीएस में आपको हिस्ट्री में दिया है. पॉलिटिकल साइंस करके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका मिनिएचर वर्जन एज अ पॉलिटी एंड गवर्नेंस इशू आपको जीएस 2 में दिया जाता है. सो मल्टीपल ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यूपीएससी हैज ट्राइड टू कवर सो दैट एन इंडिविजुअल विल बी अ पर्सन विद अ नॉलेज ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. तो अगर आप सोशलिज्म एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो तो इट विल हैव अ हाई लेवल कोरिलेशन विद ईच अदर, क्योंकि आपका पेपर 2 ऑफ सोशियोलॉजी विल बी इंडियन सोसाइटी, तो आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा. अगर आप पहले जीएस पढ़ रहे हो एंड देन इन द फ्यूचर यू आर स्टडीइंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो अगर आपका इंडियन सोसाइटी अच्छी तरीके से तैयार है तो आपको सोशियोलॉजी समझने में बहुत आसानी जाएगी. तो यहाँ पे भी ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं. राइट नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो पार्ट सोशियोलॉजी सोसाइटी का हम लोगों को ऑप्शनल में दिया है या पेपर 1 ऑफ जनरल स्टडीज में दिया है, इसका एग्जामिनेशन के लिए वेटेज कितना है. Now we already discussed that each general studies paper is of 250 marks. सही है? तो उसमें हम लोगों ने देखा जीएस पेपर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें 3 इंटीग्रल कंपोनेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी. तो 250 मार्क्स में से इफ यू सी एवरी ईयर फ्रॉम 2013 टू 2022 अगर ये आप पूरा देखोगे तो you'll find out that generally 50 to 75 मार्क्स का वेटेज आपको इंडियन सोसाइटी के ऊपर दिया है. एंड इन द रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम दिस वेटेज इज इंक्रीजिंग इन नेचर. ये कैसे दिया है? तो अगर आप पेपर आपके क्वेश्चन पेपर देखोगे तो you'll find out that there are 2 types of questions UPSC asked in your general studies paper. Some of them are 10 marker questions. Some of them are 15 marks question. Right? ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछती है. तो इफ यू सी लेट्स से 2022 का अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर सामने रखते हैं तो यू विल फाइंड आउट दैट दे हैव आस्क्ड यू 3 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्कर. तो कितने बन जाते हैं टोटल? सही है? राइट. तो दैट इज अ 75 मार्क्स का वेटेज. नाउ आपको देखना है 2030 से लेके 2022 तक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मिनिमम 50 मार्क्स का पूछा है, मैक्सिमम 75 मार्क्स का पूछा है. Now this does not mean that it will always remain the same, but they have given you an average. Sometimes it may be a case that maybe 2023 में 75 मार्क्स का या एक और क्वेश्चन ऐड करके 85 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं. But generally we have found out that out of 250 marks, around 1/3 weightage is given to Indian society. कह सकते कि ये around 1/3 weightage is given to Indian society. तो आप कंपेयर करो, 3 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में 1
पार्ट ऑफ वेटेज दिया है, बट अगर हम इसको पढ़ाई के अनुसार कंपेयर करेंगे तो उसका एक लॉजिक अलग से मैं आपके सामने रखूंगा आफ्टर सम टाइम। बट बिफोर दैट प्लीज कम बैक टू द 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो ये जो मैंने आपके सामने रखा है, these are the questions that appeared in 2022 जनरल स्टडीज पेपर 1 मेंस एग्जामिनेशन। और ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने आपके सामने टाइप करके रखे हैं। नाउ वी हैव टू डू वन एक्टिविटी हियर फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। नाउ we will go through each question. We are not here to discuss the answers of these questions or try to write an answers of this question. वो तो बात की बात है, जब हम लोग क्लास करेंगे पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। But today we have to do an activity here कि इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है या किस चीज के ऊपर this question has been asked. So let's try to find out the area on which this question is, let's say, designed. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड कौन सा है ये हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्लीज गो थ्रू द 6 क्वेश्चंस एंड देन आई विल कम बैक टू यू अगेन। पढ़िए। नाउ लेट्स गो टू ईच क्वेश्चन वन बाय वन। तो पहले क्वेश्चन में आप मुझे बताइए किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा उन्होंने? यस, तो कास्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, सही है। तो कास्ट जो है एज अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो पहले कास्ट सिस्टम हुआ करता था, आज कास्ट सिस्टम हुआ करता है, लेकिन सेम ही टाइप का है क्या या उसमें कुछ चेंज हुआ है? तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा है। आज आंसर की बात नहीं करेंगे, यही तो थॉट प्रोवोकिंग चीज है और उसके ऊपर आज हम लोगों को जो लगता है। तो ऐसे थोड़ी ना कि ये क्वेश्चन आया और उन्होंने पूछा कि हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस, आपने लिख लिया यस फुल स्टॉप, आगे चले गए। ऐसे तो आंसर में नहीं कर सकते, राइट। तो आपको बताना पड़ेगा, इलेबोरेट करना पड़ेगा किस चीज में लॉस्ट किया है, किस चीज में नहीं किया है, रिगेन कर रहा है। तो दैट विल बी डिफरेंट एरिया ऑफ डिस्कशन इन द स्टडीज दैट वी आर गोइंग टू हैव। बट पॉइंट यहाँ पे है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कास्ट सिस्टम के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो हैव वी डिस्कस दैट सीलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। नो सेकंड चीज देखो किसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अरे सही है, तो पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। क्या ये भी पार्ट था आपके सिलेबस में? So now what we are going to understand here is that UPSC asks you a questions only based on the syllabus that is given. So because now you are new to the field of UPSC, generally आपने ये बात सुनी होगी या ये बात आप लोगों ने कही होगी to your parents or your friends that UPSC बहुत difficult एग्जाम है, everything under the sun is a part of the syllabus. तो नहीं, दिस इज अ मिसनोमर, ये गलत बात है। मतलब ये हमारे बीच में रखेंगे, आप आपके घर पे जाके सब बोलो कि नहीं एवरीथिंग अंडर सन कम्स इन द एग्जाम, बहुत डिफिकल्ट है, उनको डराओ तो थोड़ा ज्यादा सपोर्ट देंगे, राइट। बट पॉइंट इज दैट कि ऐसे नहीं है। यूपीएससी हैज इट्स ओन सिलेबस और उसके बाहर जनरली यूपीएससी नहीं जाता। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग आर ओनली पार्ट ऑफ द सिलेबस दैट दे हैव मेंशन्ड एंड वी आर डूइंग अ क्रॉस चेक एनालिसिस कि क्या सच में ये हो रहा है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या आपको रीजनलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा है? क्या ये सिलेबस में था? देखना चाहेंगे एक बार वापस, देखिए क्या यहाँ पे दिया है, क्या यहाँ पे पॉवर्टी दिया था, राइट। आगे जाते हैं, देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म अंडर द थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। क्या ये था टॉपिक में सिलेबस में? ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, ऐसे था पॉइंट, राइट। नाउ प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 5। नाउ ये क्वेश्चन पढ़ने का एक और रीजन मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है आई नो इंग्लिश लैंग्वेज
but UPSC sometimes may surprise you by giving such type of a question जो question ही समझ में नहीं आए कि क्या पूछे. If you do not understand question, how can you write an answer? That becomes another challenging part. So yes, you need to work on your language. So we all know English language because maybe you do because of our let's say education that we are going through or have completed. English was a part of it, but there is always scope for learning new things, and UPSC will always give you a pointer that you have to learn new and new things. तो ये आपको एक चीज दिखाने के लिए है, but point is that again they are talking about customs and traditions, right? Now let's talk about question number 6. Now this is an interesting question. तो इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि डिजिटल एजुकेशन के बारे में कुछ बात हो रही है. And some of the students may get confused that this is a polity or government scheme related question. कि डिजिटल एजुकेशन इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है उसके बारे में उन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट बिकॉज 2022 का क्वेश्चन है, कोविड जस्ट कम फिनिश हुआ है एंड डिजिटल एजुकेशन बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट टाइम पीरियड. और आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन ही एग्जाम दिए होंगे ग्रेजुएशन के, मजा आया था ना उस टाइम. तो क्या एग्जाम थे, एग्जाम के नाम पे एग्जाम हो रहा था, ऐसे ही पास हो तो कोई बात नहीं. तो देखो बहुत सारे लोगों को लगेगा तो गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, बट नहीं, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. बट वी हैव टू बी वेरी अलर्ट हियर क्योंकि पॉलिटी इज अ पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 2 और जनरल पेपर स्टडीज पेपर 1 में अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ हिस्ट्री क्वेश्चन, इट इज नॉट अ ज्योग्राफी क्वेश्चन. तो व्हाट रिमेन्स इन जीएस पेपर 1? इंडियन सोसाइटी रहता है, तो ये इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन पूछा है कैसे, तो मैं उसको आपका एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ. नाउ डिजिटल इनिशिएटिव्स जो है ये इसका इम्प्लीमेंटेशन will not be only dependent on the efforts that government is making. It is also on the basis of the acceptance of society. कैसे? तो चर्चा के लिए आपके सामने let's say we will put this in front of you. Now just think about it. Digital initiatives in education can be only possible if there is a smart device available with the student, isn't it? अरे सही है क्या? Now, some of the student might have joined this particular session online. तो Teams के through join किया उन्होंने या YouTube पे देख रहे हैं. So they need to have a smart device with them. ना? At least let's say there shall be a laptop or let's say tablet or कुछ नहीं है तो at least एक smart device mobile phone तो होना ही नहीं. You think about it. India has, let's say we are saying 140 crore people or let's say 30 crore families. So how many of Indian families may not have smart device in their family? So we can connect it to poverty का concept. So according to some estimates, 1/4 of Indian population lives under poverty, which is let's say 47 rupees per day. उनका इनकम लेवल का लाइन रखा है. तो जिसका 50 रुपए से कम इनकम है उसके पास स्मार्ट डिवाइस होना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है. कह सकते हैं हम लोग स्मार्ट डिवाइस ही नहीं है तो डिजिटल एजुकेशन आप ले ही नहीं सकते. Now second, there may be a possibility that smart device is there in the family, but in the family of 4, 5, 6 people, only one smart device is there, which is with the father. Right? एक ही स्मार्टफोन है फादर के पास रहता है. Now father must be doing some activity, might be having some छोटा सा street vendor है या कोई छोटा सा let's say informal sector में जाके जॉब कर रहा है. So now that person has let's say 3 children. 2 boys and a girl. Now all of the 3 children, उनका स्कूल डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन हो गया है. So now you tell me all of these 3 kids are having school at the same time or in that time period also that father has to go outside and work. Let's say उसका सब्जी वाले का ठेला है तो उसको भी तो मोबाइल लगेगा ना, कोई यूपीआई से पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट आया है नहीं आया चेक करने. तो now ये स्मार्ट डिवाइस कौन यूज करे आप बताओ. This becomes a challenge. Now this is not up to government. Now government is making it free, but now is it affordable to the candidate also we have to see. Now तीसरी चीज कि चलो स्मार्ट डिवाइसेस शाम में पापा घर आ गए and now let's say the 3 children are waiting for him so that they can complete their work. But now you think about it. There are 3 children.
Or let's make it simple. There are only two children. One is a boy, another is a girl. Who will get a preference in using that smart device? Can we say a boy? Because of the patriarchal nature of society. So girl will be always will be given a secondary treatment in most of the part of Indian society, in every aspect of social life, including digital education. So this is not up to government. This is up to the societal standards that are there. So girl child will be given a secondary treatment. Now fourth point आप सोचो कि affordability also plays an important role कि जो भी digital device use करना है उसके लिए आपको internet लगेगा. At some point of time you need to take a printout. तो ये सारे चीज के लिए पैसा available है. Now it is very important that we all come from a very good family background, affluent family background in the matters of education. So we find that these things like this is nothing. कि क्या आप क्या 3 महीने के लिए 666 रुपीज का रिचार्ज नहीं कर सकते क्या? But there are, let's say, 1/4 of the population lives in our country which earns less than 47 rupees per day. So you cannot, let's say, argue that इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है. तो obviously they do not have this money, and this education becomes a scare possibility for them. Now, when you will become a government officer in your future, and suppose a person comes to you wearing a very old clothes coming from a very long distance rural area से, और आपको बोलता है कि सर ये मेरा काम है, ये थोड़ा सा आप अगर कर देते, और आप उसको बोलते हैं कि भाई 5:30 बज गए, ऑफिस खत्म हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, because I'm not legally binding to you now, 5:30 is an office time. तो बोल रहा है कि सर मैं 3 दिन से पैसा जमा करके बस का टिकट निकाल के आधा रास्ता चल के आया हूँ. And if the person is not understanding this because he's a government officer, never seen this particular life in the society, so that person cannot be a good officer because he is not understanding the society of India in a real sense. उसको पता होना चाहिए कि हाँ गांव में आज भी ऐसी बहुत सारी जगह है in the hinterlands of India जहाँ पे बस नहीं पहुंचती. तो बहुत सारे गांव पहाड़ से लोगों को they have to walk kilometers and kilometers to come to a place जहाँ पे उनको गवर्नमेंट बस आएगा. And even there is a very rare possibility that they have a sufficient money into their pockets to buy a ticket. 50 रुपए का टिकट, 20 रुपए का टिकट निकालने के लिए बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं है. If that, let's say, a villager is coming to, let's say, district place by doing all these things, and you are simply saying that time नहीं है, या आप लोगों ने ये 2 डॉक्यूमेंट नहीं लाए तो मैं आपका काम नहीं कर सकता. So that person has not understood the Indian society. But it might happen because जो लोग लाइफ में अपना खुद का एक्सपीरियंस लेके चले उसी के ऊपर उनका कंसेप्शन बनता है. But now because you are into civil service preparation, whatever might be your individual or let's say educational background or जहाँ पे भी आप बड़े हो, maybe from urban area, but this part of the society shall be known to you. Communalism issue क्या है इंडिया में, रीजनलिज्म इशू क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. That's why they have introduced this part into syllabus. अरे समझ रहे हो, राइट? तो हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में क्यों दिया है. अगर हम लोग ये सब्जेक्ट समझेंगे, पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, then we will be able to understand कि what kind of questions UPSC can ask on this part of syllabus, और हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे तो हम लोगों को एग्जाम में मार्क्स मिलना आसान हो जाएगा. तो एग्जामिनेशन के लिए क्यों पढ़ना है ये तो हम लोग समझ पाए. तो अभी एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना है, व्हाट शैल बी द सोर्सेस टू स्टडी इंडियन सोसाइटी पार्ट, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव मेंशन्ड 4 एनसीईआरटी बुक्स, राइट? उसमें अगर आप देखोगे तो देयर इज अ बुक ऑफ 6th स्टैंडर्ड जिसमें से 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं. अभी थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा होगा. So I have already uploaded this particular image on a Telegram channel. Name of the Telegram channel is Shivaji Kale Sociology and Social Issues. Right? मेरा नाम सब्जेक्ट का नाम शिवाजी काले सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, एंड सोशल इश्यूज मतलब अपना जीएस का टॉपिक. इट इज एन ओपन टू ऑल टेलीग्राम चैनल. उस पर आप अगर आप जाओगे तो यू फाइंड आउट दैट ये मैंने इमेज भी ऑलरेडी डाला है. यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो.
इवन दीज एनसीईआरटी जो क्लास 12 की एनसीईआरटीज है एंड क्लास 6th एंड 8th की एनसीईआरटीज है, इसकी भी पीडीएफ है अपलोडेड, तो आप जाके वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन रीड फ्रॉम देयर आल्सो और यू कैन बाय इट फ्रॉम द मार्केट. ना ये 4 एनसीईआरटीज आप पक्का पढ़ना. उसमें से जो 6th और 8th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी है उसमें से सिलेक्टेड पार्ट आपको पढ़ना है. फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी का टॉपिक मिलेगा. यहाँ पे आपको सोशल जस्टिस और मार्जिनलाइजेशन का कंसेप्ट है एंड यहाँ पे इकोनॉमिक प्रेजेंस का कंसेप्ट आपके सामने रखा है. ये एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो वाली, और उसमें से इससे आप शुरू करना. जो इंडियन सोसाइटी का एनसीईआरटी है, दिस एनसीईआरटी विल कवर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स which we will be required to understand Indian society. तो ये आप इसमें से पढ़ सकते हो. And then there is a NCERT called as Social Change and Development in India. जो नई डायनामिक चीजें इंडियन सोसाइटी में होती है, इसके बारे में इस एनसीईआरटी में डिस्कशन है. Now you need to read through all these 4 NCERT. दो तो सिलेक्टेड टॉपिक्स ही है, दो टॉपिक, बाकी दो एनसीईआरटी छोटी छोटी ही है. आगे और इसमें बहुत सिंपल चीज आप देखो ना, वी ऑल स्टूडेंट हियर आर मोस्टली ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, वी आर इन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग आवर ग्रेजुएशन. तो 12th स्टैंडर्ड का बुक पढ़ने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. नाउ आई विल सजेस्ट दैट यू कैन रीड थ्रू दीज बुक्स जस्ट लाइक अ नॉवेल. तो कोई कंसेप्ट के ऊपर स्टक होने की जरूरत नहीं कि ये क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना. कोई बात नहीं, जस्ट रीड थ्रू द बुक्स इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, जैसे कि कोई नॉवेल पढ़ रहे हो. एंड व्हेन वी विल मीट इन द क्लास वी विल डिस्कस ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सिलेबस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. तो उस टाइम पे आपको आई विल गिव अ लॉट ऑफ हैंड रिटन नोट्स आल्सो, मतलब आई विल राइट इन द क्लास ऑन द बोर्ड, यू विल आल्सो राइट विथ मी. कुछ डिक्टेशन किया जाएगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी डिस्कसिंग लॉट ऑफ इश्यूज. तो आप रनिंग नोट्स भी इसके निकाल सकते हो. तो एक आपका हैंड रिटन नोट्स एक बन जाएगा क्लास के साथ साथ. अलॉन्ग विद दैट सम प्रिंटेड नोट्स विल बी गिवन टू यू अबाउट दिस सब्जेक्ट. उसके साथ साथ ये एनसीईआरटी व्हिच आर कंसीडर्ड एज अ बेसिक रेफरेंस और बेसिक बुक्स दैट यू शैल बी रीडिंग. अलॉन्ग विद दैट अगर आपको टाइम मिलता है एंड जरूरी लगता है तो ये बुक भी आप इसमें पढ़ सकते हो. सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, राम अहूजा इसके लेखक है. तो ये बुक आप एक बार देख सकते हो. बट उसके पहले आई विल सजेस्ट यू ऑल पीपल that this is the most important part of our preparation. और ये है न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर represents current affairs. बिकॉज अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे. वी हैव एक्सपीरियंस इट दैट कि जो कंटेम्पररी टाइम्स में हो रहा है उसके ऊपर सिलेबस को कनेक्ट करके यूपीएससी इज ट्राइंग टू फ्रेम अ क्वेश्चन. एंड दैट्स व्हाई रीडिंग अ न्यूज़पेपर, preparing the current affairs and contemporary issues becomes an important part of preparation of Indian society in specific way, and in general for your UPSC preparation current affairs remains an important part. तो हम लोग सीक्वेंस याद रखेंगे. We will go through the NCERTs first, then we will keep on reading the newspapers. और जरूरत पड़ेगा तो आप लोग राम आहूजा साहब का बुक पढ़ोगे. बट उसमें भी वापस एक बार प्रोसेस याद रखिए. NCERTs, start reading with NCERTs at your own pace and just try to read it like let's say novels for the purpose of Indian society. We will give an in-depth study to these part of syllabus when we will start with our lectures. और तब तक आप उसका ज्यादा टेंशन मत लीजिए, because we will make this part of syllabus very easy, fun learning activity आपको बना देंगे, and so that will be easy for you to do. बट उसके दौरान के टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हैं. अंडरस्टूड? तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑन द टेलीग्राम चैनल that I have suggested to. उस टेलीग्राम चैनल पे आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि कुछ लेट्स से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है पोस्टेड जो आते रहते हैं और जो सोशल इश्यूज के रिलेटेड है वही मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूँ. और अदर जो अलग चीजें होती है विच आर रिलेटेड टू अदर पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज, उसके लिए शिवाजी काले करंट अफेयर्स करके टेलीग्राम चैनल, उसके ऊपर आप जा सकते हो. अदर जीएस का जो भी करंट अफेयर्स के, इकोनॉमिक्स आ रहा है, पॉलिटी आ रहा है, करंट अफेयर्स में जो भी आ रहा है उसके आर्टिकल्स वगैरह या कुछ चीजों के इंफॉर्मेशन वहां पे डाले जाएंगे. सो अगेन फ्री टू ऑल है, यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस. ओके,
तो उसमें भी आप जाके पिछले वाले सारी चीजें देख सकते हो. अंडरस्टूड? So this is what is all comprehensive nature of our subject, which is a very, I will tell you, an easy part of our syllabus because see, we all know our society because we are part of it for last at least 2 decades. So just we need to understand it in a rational way, in a scientific way, and in a way where the society in general हम लोगों को पता होना चाहिए because we have our own experiences of social life which may be parochial in nature because पूरा दुनिया नहीं देखा है, पूरा देश नहीं देखा है. But here we will try to understand the society in general and specifically from the examination point of view कि क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है और उसका आंसर लिखने के लिए sufficient content कहाँ से जमा करना है और उसको किस अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है. That is what we will keep a target in our lectures in the coming time, right? So that is all from my side in this section. But if you have any doubt, particularly related to Indian society part in GS paper 1 or UPSC preparation in general, आप उसके questions आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है? Any questions? तो रुक जाते हैं यहीं पे. ठीक है? In this type of case also, class में भी even after the lectures will start, you will have opportunity to ask questions that you need to ask. जैसे कि डाउट आता है कोई सिखाते समय, you will have 3 opportunities for the same. Generally, we'll prefer that at the end of the session you can ask the question. So we'll keep 5 to 10 minutes in every session for question answer thing. Or in sometimes it may happen that कि कोई topic is under discussion और आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा मुझे अभी question पूछना पड़ेगा ही पड़ेगा. You can simply raise a hand and ask the question. और कुछ लोगों का ऐसे भी होता है कि I do not want to ask a question in a class group में, तो मेरा intellectual level किसी को पता ना चले कि मैं कितना smart. So they can wait after the lectures also and 1-to-1 भी मिल सकते हैं within the class also या फिर ऊपर आके आप केबिन में भी मिल सकते हो. So lot of opportunities will be available for you to let's say study. बस उसमें सिंपल अपना ये है कि आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा. There is no other way around about it because examination easy है but the competition makes it tough. क्योंकि आप जितना मेहनत कर रहे हो उससे कोई थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने का कोई हमेशा प्रयत्न करेगा and that will make the examination a little bit difficult. But we will surpass all the challenges that let's say